So let the doctors talk about health, but about wealth and financial planning, our respected Mr. Suryakant Sharma sir will talk. And for this purpose, Department of Economics and the Research Unit of Golaghat Purbanchalik College, in the collaboration with Association of Mutual Funds in India, in short AMFI, have organized this national webinar on wealth creation through financial planning. And we have specially invited Mr. Suryakanta Sharma sir as the keynote speaker for today's webinar. And as well as we have among us Mr. Sabzar Ahmed sir, the moderator of AMFI. I cordially welcome Mr. Suryakant Sharma sir and Sabzar Ahmed sir to the session. And now without further delay, I would like to request my colleague Mr. Pankaj Gogoi, HOD of Economics Department and the coordinator of NEP, and especially convener of today's webinar, to kindly deliver the inaugural speech. Are you there, sir? Pankaj sir, are you there? Yes, I'm here. Yes, sir, you can start. Okay. Thank you, Dipsika Gohai. Good evening, everyone. I feel very happy to see all of you in this virtual platform. It gives us pleasure to organize this national webinar on wealth creation through financial planning, organized by Department of Economics and Teacher Unit of Golaghat Purbanchalik College, in collaboration with a Association of Mutual Fund of India. Hope the subject matter of this workshop will be benefited to all of our participants. I cordially welcome to all of our participants who will attend the webinar till the end of the session. Here, I cordially welcome to today's keynote speaker, Mr. Surekan Sharma sir, and Mr. Sabjar Ahmed, the moderator of AMFI. Actually, Mr. Sabjar Ahmed sir has given fully support to organize this webinar in a national level stage. He is inspiring us to organize this webinar recently. This webinar will help us in the context of socio-economic platform. Hope that this webinar will help us to develop out the financial side as well as economic side on our day-to-day life. Now I would like to conclude and inaugurate this session, as well as I am overwhelmed with the greatest happiness to have the presence of a magnificent personality, Mr. Surekan Sharma sir, among us. And as we all know, Mr. Surekan Sharma is the keynote speaker of today's national webinar. I hope we all learn many productive from his presentation. And now I have honor to introduce Mr. Surekan Sharma sir. Thought, though it is not quite possible to give the freshest and complete introduction of a greatest personality like him, Mr. Surekan Sharma sir, still I will try to give a short introduction of Mr. Surekan Sharma sir. If something about left unsaid, then kindly pardon me for that. Mr. Surekan Sharma sir is a commerce graduate and master in law with specialization in corporate law. He was also a chartered associate of Indian Institute of Bank and Finance. C. Somasar has over 35 years experience in banking and finance and security market, and
had initially served in a leading financial institution. Thereafter, the Department of Financial Service, Ministry of Finance, Government of India, finally in Security Exchange Board of India, that means SEBI. Sharma sir joined SEBI, Security and Exchange Board of India in 2003 and served in SEBI more than 16 years in different departments of SEBI. Lastly, in addition to our assignments in SEBI, he was in charge of Office of Investor Awareness and Education is SEBI's Northern region for more than 5 years. And in this period, more than 15,000 financial literacy and investor awareness camps were conducted, and he himself had addressed as a guest speaker in more than 600 IAPs. Sisoma sir was also a member of working group of NCERT for developing the vocational courses on mutual fund for the students of 11 and 12 classes. Sisoma sir also a recipient of Excellence Award from the leading trade body for the promoting of mutual fund in India. Sri Soma sir is also a mentor of a few NGOs working for financial literacy and investor awareness in the country. After from SEBI, in 2019, he has joined Association of Mutual Fund in India, AMFI, which is the FX body of mutual fund in India, as a senior consultant for spreading financial literacy and investor awareness across the country among the citizens of India. Thank you. Over to Dipsika Gohai. Yes, yes. Thank you, Mr. Pankaj Gogoi, sir. And now I would like to request our principal, Mrs. Malamani Goswami ma'am, to deliver the welcome address. Ma'am, are you there? Deepsika, Yes, ma'am. Okay. thank you, Deepsika. A very good evening to everyone gathered here. It gives me great pleasure to extend you all a very warm welcome to this national webinar on wealth creation through financial planning, organized by Department of Economics and Research Unit of Golaghat Purbanchalik College in collaboration with Association of Mutual Fund in India. I cordially welcome today's keynote speaker, Mr. Suryakant Sharma sir. I cordially welcome everyone present here, including our dignitaries, teachers, and students. In today's webinar, I am expecting all of your constant support and active participation till the end. I hope this workshop will be very productive for all of us, as we all should have to precisely know with the expectation of the bringing the precise knowledge and various ideas on financial planning through this webinar. I conclude my welcome addresses. Thank you. Thank you all. Namaskar. Deepsika? Okay, okay. Thank you, ma'am, for your deliverance. Now we have Thank you. come to the central part of the session, that is theme speech. As we all know, it will be delivered by our respected Mr. Suryakant sir, Mr. Suryakant Sharma sir. I kindly request Mr. Sharma sir to continue his speech. Thank you, Deepshikha. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir, It's you are audible. audible. Thank you very much. Respected principal of the college, respected HOD of economics,
and lovely moderator of the program, Deepshikha. I am thankful to all of you for giving me opportunity to be with you through this platform. But Principal Ma'am, I would be more than happy to come to your college physically as well at the first opportunity when I visit Assam. Thank you, sir. And that will give us opportunity to interact in person. And you will appreciate actually, sir, that in-person interaction have different impact. Of course, Yes, this platform will give us a basic idea what we are doing, what is your mission. So I am thankful to HOD sir for giving me opportunity to be with thank you. you, sir. And the topic he has selected today is wealth creation and financial planning. Yes, yes, sir. One thing I want to make it clear, HOD sir, you are a teacher, you are a professor of economics. I am a student only. So I will like to talk in the language of the students only. I will Okay, try sir. to make the subject as simple as I can, so that I can reach to the students and give some impression about the topic. Okay, sir, no problem. Secondly, this program is from Association of Mutual Funds from India, HOD sir, you will appreciate, but it is not a marketing event or a promotional event of mutual funds. That I want to make it clear right at the outset. This is purely an investor awareness program. Okay. And Deepshikha, there are two categories of investors. One category like you, HOD sir, Sir. principal ma'am, Yes, sir. other faculty members who are already earning. But there is other category of participants, HOD sir, those who are Yes. your students. They are not earning today, and they might even wonder why this program is for them. They are not earning, they are not investor, they are not saver. Why this program for the? But I want to tell particularly students, Deepshikha, that this Yes, sir. program is equally relevant to them as well. Because they are going to earn very soon, down the line in 2-3 years. So they should be sensitized at this stage itself. What is the importance of money in their life and how they can have reasonable money in their life, not only for their needs, but also for comfortable life. And apart from that, for their family obligations and fulfilling some of their dreams as well. So, my dear friends, first thing you should appreciate, and I think Principal Ma'am and HOD sir will also agree with me, that money plays is very, very, very important in our life, important part in our life. We all need money, and not in one go, but also during the life time. Many times we will need money, and Deepshikha, huge Yes, money, sir. huge You are quantum right. of money we will be needing. Correct. That is why it has become very relevant to understand what is wealth. So first we should understand what is wealth. HOD sir, to me, wealth is nothing but creation of assets which can be monetized when we need the money. Yes. This is our wealth. We create wealth. Wealth can be of financial assets, when can be of non-financial assets. Financial assets, Deepshikha, real estate, or non-financial assets are real estate, gold. These are non-financial assets. And what are the financial assets? Mutual funds, shares, debentures, bonds, government securities. These are financial assets. And why we create wealth? What is the need? Because we will be needing money in our life, and HOD sir, and keeping cash all the time is a dangerous proposition. Please understand what I am saying. Because there can be other alternative. HOD sir can simply say, sir, we can keep the cash, we can keep piling the cash in our life. But two distinct disadvantages there in cash. First is value of the cash being get diminished every year, HOD sir, because of inflation. Yeah. So suppose you accumulate 10,000 today and keep it in a box. Next year in Deepshikha, if you count the notes, it will be 10,000 only. But the value of that 1,000 had diminished like anything because of inflation.
That is why it is not desirable that we should keep cash in as an wealth. Then why we wealth? Why we create wealth? Because HOD sir, we will be needing money in our life for many things in our life, which we can term that as milestones in our life. And what are the common milestones in our life, Deepshika, for which we will be needing huge money? The first and foremost milestone is marriage, for which we will be needing money. After that, HOD sir, every family desires to have their own house. For that, we will be needing huge money. Then, four-wheeler is a minimum thing nowadays, but again, for that, we will be needing money. After that, one more thing is common nowadays in the generation of Deepshika, which were not common in my generation, Deepshika, that is going on vacations. Every young people wants to go on vacation. Not only domestic vacation, HOD sir, but also international vacation. Not once, but regularly, every 3-4 years. But for that, you will be needing money. Then one more important, most important milestone will be happening in your life, Deepshika. That is higher education and professional education of your children, for which you will be needing huge money. Then marriage of the children, again, you will be needing money, substantial money. And lastly, but not least, Deepshika, you will be needing huge money, and HOD sir will appreciate for enjoying your retirement life. Because nowadays pension is not there in most of the state governments, even have dispensed with the pension. And for private, I don't know whether your institution is private or government, but in private institution there is no pension as such. Yeah. So after retirement, how you will be managing your affairs? Because the salary which you are getting today from your employer will literally will not be there since you have retired. That is why for retirement life also we will need money. So how to create wealth? The most question comes in our mind, HOD sir, is how to create wealth. The first step of creating wealth, Deepshika, particularly for salary class, middle class person, is to save. We have to save. There is no other option. Because the first step of wealth creation starts when you start saving. Normally people do a mistake, and I appreciate Deepshika will not make it. I have made it, very honestly speaking. I don't know whether principal ma'am will agree with me or not, but I did that mistake which you should not do, HOD sir. That is, we literally lost first 3-4 years by not saving anything. Arey Baba, the life is very long. Let me enjoy with the money I have started earning. I will start saving after 4-5 years. There is a long journey to be undertaken. Why so hurry? But HOD sir, I want to tell your young faculty members like you and Deepshika, and to your students as well, Sir. That is a blunder on our part. Sir. Start saving right from the first month when you start earning. Yes, sir, you want to tell something? Yeah, sir. Some people are not hearing the voice. They personally message me right now. Am I audible to all of you? I think I'm audible to Deepshika. Sir, you are audible, sir. You are audible. But there is some other issues from their side. So tell them, please exit and rejoin again. Please, sir. Please. Okay, no problem. No issue. Because, so, sir, okay. So, HOD sir, the first step we have to take is start saving right from the first month when you start earning. I don't know whether Deepshika has started saving or not, but if she has not, I will request her from February itself, when you get February salary in 1st of March, start saving. And don't shy that your salary may not be extraordinary. I am not saying that you should save 50,000, 80,000, 1 lakh. Whatever you could, you should start saving. Maybe 10,000, maybe 5,000 even, maybe 2,000 even. But start saving right from the first month when you start earning. And this is also I'm advising to students as well, when they start earning. Second thing I want to tell Deepshika to you, be regular in saving.
It should not happen that you start saving in March, then forget in April, again thought of saving in May, then again forget for next 3-4 months. Again you walk up, oh, I didn't save, I should save. That is not the proper way of saving. You must be regular every month, come what may. Of course, situation will keep changing, but you must make it a point that you should save some money every month. And third and last thing about saving, Dr. Pawan Kumar Sharma, I want to tell these young students and faculty members, with the increase in your income, you must increase your savings. And Deepshika, every year you get increment from your college. Some DA also increases in between. Some allowances also keep increasing every year. So with the increase in income, you must increase your saving. So I again repeat 3 things about saving. Number 1, you start saving right from the first month when you start earning. Number 2, be regular, be religious, be develop a discipline of saving every month, come what may. And thirdly, keep increasing your saving with the increase in income. And ideally, it should be 10% increase, Deepshika. Suppose this year you are saving 1,000 rupees a month. Then in second year, you must increase 1,100 rupees a month. In the third year, you should save 1,210 rupees. Incremental increase in saving. This is very, very important, and I can tell you, all of you, this is going to change your life forever. And you will realize the importance this I am saying today after 15-20 years. So this is the first step of saving. Then naturally, what we have to do with the savings? Deepshika, there may be a few participants who say, yes, we are saving. But what foolishly they are doing, they are keeping their saving in cash at home, in a box. That is a blunder on their part. That is a blunder on their part. Keeping saving at home in cash, HOD sir will appreciate, is a crime. I am using very harsh word, HOD sir. Crime against yourself, crime against your family, and crime against our country as a whole. We should never keep cash of saving in our home. Of course, some emergency fund is required, HOD sir. That is a different story. Every family keeps 10, 20, 30,000 and cash all the time. That they should keep, but not beyond that. Then now what to do with the savings which you are making? There is other way, Deepshika. That is deploying or putting your saving into some products. And deploying and putting your saving, Deepshika, it is called investment. So the first step is saving and the second step is investment. So you should not only be saver, but you should also put your saving into some investment product. And the investment is the second step. So saving is the first step, investment is the second step. And what is the purpose of investment, HOD sir? Have you ever thought of it? What is the purpose? The purpose of investment is very simple but clear. My money should also earn money for me. That's the only purpose of investment, that my money which I have saved and invested somewhere else in some products also earn money for me. So the purpose of investment is very simple, HOD sir. My money should also earn money for me. So there will be 2 channels of money coming in your life, HOD sir. The first channel is the money which you will be earning as salary. And second channel will be the money which you have saved and it has also started earning money for you. And HOD sir, second channel is equally important for all of us. Normally what happens with middle class, salary class person, HOD sir, normally thinks, Are Baba, it is not our domain of saving and investment. It is a domain of industrialists. It is a domain of big businessmen. They have flair of making money out of their money. No, sir, that is wrong. We can also make money out of our money. We means I am addressing to all middle class, salary class persons particularly. So every person can make money out of their money. And Deepshika, a day will come in your life. I visualize and I give you confidence
that a day will come in your life Yes, sir. that after 15, 20 years, your money which you will be generating out of an investment will be more than your regular salary. It will be happening, but it is not happening today. HOD sir will appreciate. It will take minimum 15, 20 years. That is why, Deepshikha, investment success has got a distinct feature: patience. Have patience, your money to grow. Your money will definitely grow, but just give some time, or rather good time, your money to grow. So investment is very, very important. And now, HOD sir, I keep telling in my sessions, India has been a country of savers. For centuries together, we have been a country of savers. And we should be proud of it, Deepshikha, that Indians are still one of the best savers in the world. You might have seen your mother, your grandmother, your how they have saved the money: 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees. So saving is in our blood, HOD sir. But unfortunately, we have been worst investors, particularly middle class, salary class person. We have been worst investors. So I want to tell you, now the time has come, HOD sir, when we people should also understand and appreciate the importance of being an investor. Because only through invested, Deepshikha, we can create wealth. And wealth will bring prosperity in your life. Mind it. So this is a chain. First, you have to save, then you have to invest, then you have to create wealth, and then prosperity will automatically in your life. And everybody, every individual has got right to be prospered, Deepshikha. It is not the domain of big businessman Mukesh Ambani or some big business person that only they have got right to be prospered. No, you and me have also got right to be prosper. But my definition of prosperity is very simple, Deepshikha. It is not that we should become Mukesh Ambani. No, we might not be. But we will be having money for our needs. We will be having money for our family obligations. We will be having money for our comfortable life. And we will be having money, HOD sir, for fulfilling our dreams. That is my prosperity. That is our prosperity. And I again repeat, prosperity is your right. This I will tell again in the end, giving you some advice about the how prosperity is done. So investment is the only way of creating wealth, Deepshikha. But unfortunately, middle class have saved. Actually, sir, my generation, I know, was not so prudent like your generation. But we will also have some inkling of saving. And we had also invested our money. But unfortunately, we couldn't create desirable wealth, which we could have done. But you people should do create wealth, which will be which will be facilitating your prosperity. How we couldn't create wealth, HOD sir? Have you ever given thought to it? Why my generation was not able to create wealth? Because we have got a typical mindset. My generation had got a typical mindset, and mindset was that, sir, Baba, we don't want to take any risk. We were risk averse. We were not even discussing what risk is, how risk can be managed. Because we were very clear, we don't want to take any risk in investment. And that was a blunder, Deepshikha. That was a blunder, HOD sir, on my part, on part of my generation. Hello. What I want to tell all of you, you must understand that in investment, risk is there. Of course, in some products, HOD sir, risk might be minimum, particularly government schemes. In some products, risk might be normal. In some products, this might be extraordinary. High risk is there. So in investment, risk is there. Please appreciate. And once you accept that risk is there, then HOD sir, one thing will come in your mind: how I can manage my risk. That is very natural. Everybody will think of managing their risk. Yes, my dear friends, every person can manage their risk by practicing a very simple two-word formula. Only two-word formula, sir.
And it is not an extraordinary thing I'm telling you. The formula is, Deepshika, Yes, think, understand and invest. सोच कर समझ कर निवेश कर. In Hindi I can translate it. सोच कर समझ कर निवेश कर. Think, understand and invest. What we have to think? The two things you have to think about yourself while making every investment decision. The first and foremost thing, HOD sir, is what is my risk appetite? How much risk I can take? And every individual HOD sir has got different risk appetite. You have got different one. Deepshika has got different one. Principal ma'am has got different one. Dr. Pawan Kumar Sharma ji have got different one. And my have got different one. Why? Because our income is different. Because we are in the different age phase in our life. So Deepshika is young. HOD sir is young. Principal ma'am is not relatively so young, but I am not so young. I have crossed 60. So every individual has got different risk appetite, HOD sir, and you should take your investment decision strictly as per your risk appetite. And to Deepshika and to HOD sir, I want to tell them, take risk. You are young. You should take risk, but risk should be calculated. It should not be blind risk. And blind risk, HOD sir, simply means somebody is putting some words in your mouth, in your mind, this share will go up, that asset will go up, and without analyzing that and without having any knowledge, we simply put our money there. That is blind risk. So I encourage young people like Deepshika and HOD sir, you should take risk because you have got age on your side. You have still got 30-40 years to go, Deepshika. Unfortunately, that luxury I don't have now. That is why those who are young, I keep encouraging them to take risk, but risk should be calculated. It should not be blind risk. Second thing is, why we save, Deepshika? Have you ever thought why we save? Why we save and why we should invest money? Because we will be needing money in our life for many occasions. I have just narrated for marriage, for purchase of house, for vehicle, for going on vacation and all these things. So the best thing I can do how I can manage my investment in such a manner that when I need the money, I should have money. That is the purpose of investment. Na? Suppose, Deepshika, you have planned to purchase a house after 10 years. So after 10 years, you should have money in your hands or some wealth or some assets which you can monetize at that time and purchase the house. That is why, how we can do it, HOD sir, that we can do through financial planning. And what is financial planning, Deepshika? It is not a rocket science. Actually, some of the experts have made investment and financial planning and prosperity, HOD sir, very complicated issue. And because of those, majority of the common man feels, Arey Baba, it is not our cup of tea. Investment is not our cup of tea. We don't understand that. Financial planning is not cup of tea. That is wrong. I want to tell Deepshika, you can also make your financial plan. HOD sir can also make it. How? How, Deepshika? I will just request you next Sunday, sit with your family. Take a paper. On the paper, make 3 columns. Discuss with your family what you want to do in your life, where will you be needing huge money. Normally, what these milestones? For marriage, we will be needing huge money. For purchase of house, we will be needing huge money. For purchase of 4-wheeler, we will be needing money. Then going on vacation, HOD sir, we will be needing huge money. So in the first column, jot down what are the milestones in your life. Jot down. If I have not included anyone, you just include. What are the milestones? In the second column, against each milestone, Deepshika, now put the period when they are likely to happen in your life. Suppose somebody says that he is not married and likely to be married after 2 years, put it 2 years. Again, marriage after 2 years, then children will come their life, celebration again 3-4 years. Then after 5 years, you might be started thinking about your house, purchase of vehicle, going on vacation,
and then higher education of children happening after 25 years, marriage of the children, and then retirement after 30. So in the second column, start putting the period when it is likely to happen. And of course, HOD sir, Sorry to interrupt. Yeah. Some of my students tell me to speak in Hindi. Actually, we people prefer basically Assamese. So नहीं, can you please? आप हिंदी समझते हैं? हाँ, हम लोग हिंदी समझते हैं। हैं? अरे तो फिर तो आप पहले बोलते ना, हम हिंदी में ही बात करते, हम क्यों Actually अंग्रेजी में क्या बात था, करें? मैं कुछ मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप में हिंदी में बोलने के लिए, इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अरे फिर तो मैं तो हिंदी भाषी। नो प्रॉब्लम सर, सर प्लीज। हिंदी इज माय लैंग्वेज, हिंदी माय मदर टंग, तो आई कैन स्पीक वेल इन हिंदी, नो प्रॉब्लम। Sir, continue. Sir, actually, we don't have any problem with teacher, sir. But the students got difficult to understand your language, I think. So it will be helpful if you talk in Hindi. Okay, great. I can. तो दीपशिखा जी, हमें अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए। और एचओडी सर, फाइनेंशियल प्लान रॉकेट साइंस नहीं है, हर आदमी अपना फाइनेंशियल प्लान बना सकता है। अगले संडे को दीपशिखा जी अपने घर में बैठ जाइए, एक पेपर ले लीजिए, अपने सारे फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा कर लीजिए, उनसे डिस्कस कर लीजिए आपको जिंदगी में क्या क्या बड़े काम करने हैं। पहला कॉलम बनाइए, उसमें लिख लीजिए क्या क्या बड़े काम आपको करने हैं। दूसरे कॉलम में लिखिए ये बड़े काम आपकी लाइफ में कब कब होने वाले हैं, अंदाजा लगाइए, एस्टिमेट लगाइए, प्रिसाइसली नॉट पॉसिबल। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 35 साल, 30 साल, 40, अंदाजा लगाइए। और तीसरा कॉलम में लगाइए हर बड़े काम के लिए कितना कितना पैसा चाहिए। सपोज समबडी से दीपशिखा मैम कि मेरी शादी नहीं हुई है, 2 साल बाद शादी होनी है, और मुझे शादी के लिए 5 लाख रुपए चाहिए हनीमून के लिए, क्योंकि बाकी तो नॉर्मली हमारे फैमिलीज में पेरेंट्स ही शादी का खर्चा उठाते हैं, लेकिन हनीमून तो यू डोंट एक्सपेक्ट दैट योर पेरेंट्स विल गिव हनीमून पैकेज टू यू, दैट एटलीस्ट यू शुड मेक आउट ऑफ इट। तो सपोज कीजिए कोई कहता है मुझे 2 साल बाद शादी होनी है, हनीमून का पैकेज के लिए 5 लाख चाहिए, तो मैरिज के आगे 5 लाख लिख लीजिए। लेकिन दीपशिखा मैम, वो 5 लाख से काम नहीं चलेगा। आज कोई सोच रहा है 2 साल बाद 5 लाख में हनीमून पैकेज ग्रीस का आ जाएगा, वो नहीं आएगा। 2 साल बाद वही पैकेज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन 5.5 लाख का हो जाएगा। तो हमेशा महंगाई को भी उसमें डालते रहिए। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सबको कहना चाहता हूं, और एचओडी सर आपको विशेष तौर पर मैं सबको बताना चाहता हूं। अच्छा दीपशिखा मैम बताइए, कोई बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए की डिग्री अगर आज 2 साल का रेगुलर कोर्स करना हो, कितना पैसा लगेगा? अराउंड 20 लाख। बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए का 2 साल का डिग्री अगर लेना हो तो करीब करीब 20 लाख आज का खर्चा आ जाएगा रेगुलर। दीपशिखा मैम, ये आज आ रहा है 20 लाख। जब आपके बच्चे 25 साल बाद एमबीए करने जाएंगे किसी बड़े इंस्टीट्यूट से या फॉरेन में जाएंगे, तो जो एमबीए की डिग्री आज 20 लाख रुपए में आ रही है, वही डिग्री 25 साल बाद कम से कम 2 करोड़ रुपए में आएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आज एमबीए की डिग्री 20 लाख में आ रही है, लेकिन 25 साल बाद यही डिग्री करीब करीब 2 करोड़ रुपए में आएगी। तो आपको, अगर आपके एक बच्चा भी है तो 2 करोड़ रुपए आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, और अगर 2 बच्चे भी हैं तो आपको 4 करोड़ रुपया केवल बच्चों की पढ़ाई के लिए ही चाहिए। कहां से आएंगे दीपिका मैम? वो आएंगे, पक्का आएंगे, अगर आप आज से ही बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा सेव करना और इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगी तो आएंगे। अब आखिरी में एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मान लीजिए एचओडी सर आपकी एज अभी 30 ईयर्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल दैट यू आर अराउंड 30, और आप ये कहते हैं मेरा घर का खर्चा अभी करीब 30,000 में मैनेज कर लेता हूं, नॉर्मल बात कर रहा हूं, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं मैं। आप ये कहते हैं कि मेरा घर का खर्चा अभी मैं 30,000 में मैनेज कर लेता हूं। एचओडी सर, 30 साल बाद जब आप रिटायर होंगे 60 की एज में, नॉर्मल 65 होता है आपके एजुकेशन में, लेकिन मैं 60 मान लेता हूं, तो अगर 30 साल बाद जब आप रिटायर होंगे, कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी एचओडी सर, जो घर का खर्चा 30,000 रुपए महीने में चल रहा है दीपशिखा, 30 साल बाद उसी घर खर्च के लिए
आपको कम से कम 2 लाख रुपया महीना चाहिए महंगाई की वजह से। हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, अरे छोड़ो ना, भगवान करेगा, खुदा करेगा, होगा जो देखेंगे, जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। मैं एक बात आप सबको कहना चाहता हूं, आई डोंट नो वेदर प्रिंसिपल मैम विल एग्री विथ मी और नॉट। भगवान ने दीपशिखा हमें धरती पर भेज दिया, भगवान का काम खत्म हो गया। हमें अपनी लड़ाई खुद को यहाँ लड़नी पड़ेगी और जीतना पड़ेगा। और वो लड़ाई लड़ी जाएगी, जीती जाएगी। वो कैसे? अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए, अपने बारे में सोचिए, मुझे कब कब क्या क्या कितना कितना पैसा चाहिए, किस किस काम के लिए चाहिए। और जो चार्ट मैंने बनाया, अगर ये चार्ट आप बना लेंगे दीपशिखा, तो अब आपके सामने ब्रॉडली पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कब कब मुझे किस किस काम के लिए कितना पैसा चाहिए। And Deepshika, you might be surprised to know a middle class, salary class person of the age of 30, HOD sir, will need not less than 10 to 12 crore rupees for his or her milestones only. अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने के लिए आपको 10-12 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। HOD सर ये कहाँ से आएंगे? अभी मुझे दीपशिखा तो बता रही थी कि सर आई हैव डिसाइडेड, अमिताभ बच्चन का KBC दोबारा आने वाला है, मैं वहां जाऊंगी, फर्स्ट प्राइज जीत के आऊंगी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। बट व्हाट अबाउट लैक्स ऑफ अदर्स? बाकी सबका क्या होगा? और ये पॉसिबल नहीं है सब तो अमिताभ बच्चन के शो में जाएं और 7 करोड़ रुपए जीत के आ जाएं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पैसा बचाना पड़ेगा, उसके लिए आपको लगातार पैसा बचाना पड़ेगा और पैसा बचाकर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। और ये जो चार्ट मैंने बनाया HOD सर, इसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं, वित्तीय नियोजन बोलते हैं। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर आदमी का अपना फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। और फाइनेंशियल प्लान बनाना रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान काम है। हर कोई अपना फाइनेंशियल प्लान घर बैठकर बना सकता है। तो जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले संडे को बैठकर अपना एक ब्रॉड फाइनेंशियल प्लान ड्रॉ कर लीजिए। और जो बच्चे आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो जॉब करने लगेंगे, जब कोई बिजनेस करने लगेंगे 2 साल में, 3 साल में, तो पहले साल में ही अपना फाइनेंशियल प्लान बना लीजिए। अब फाइनेंशियल प्लान का बेनिफिट क्या होगा? दीपशिखा मुझसे पूछ सकती है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल प्लान? दीपशिखा, फाइनेंशियल प्लान विल गिव यू ब्रॉड आइडिया ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में कब कब आपको कितना कितना पैसा किस किस काम के लिए चाहिए, ये एक ब्रॉड आइडिया आपको फाइनेंशियल प्लान देगा। और जब आइडिया मिल जाएगा तो नेचुरली आप मेहनत ज्यादा करेंगी। और मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो आदमी अपने लाइफ के गोल्स को डिफाइन कर लेता है, अपने गोल्स को क्लियर कर लेता है, वो ज्यादा मेहनत करता है। दैट इज वाई द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सो आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज डू मेक फाइनेंशियल प्लानिंग, and it is not a rocket science. Every person can make it. And HOD sir, I will request you first to make your financial plan, then you can guide others, your staff members, to make their financial plan. Because financial plan आपको एक दिशा देगा, एक डायरेक्शन देगा पैसा बचाने और उसको निवेश करने में। अब एक और बात जो इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है दीपशिखा, दैट इज HOD सर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। Power of compounding is 8th wonder of the world. And power of compounding क्या है HOD सर? Power of compounding कुछ भी नहीं है। Power of compounding simply means जब जब आपको पैसा बचाकर आप इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न को कभी भी आप कंज्यूम नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे। उसको क्या करेंगे HOD सर? उसको री इन्वेस्ट करते रहेंगे। और ऐसा एक बार नहीं करेंगे, हर बार करेंगे। फिर चाहे रिटर्न 500 रुपया हो, चाहे 5000 हो और चाहे 5 लाख हो,
whatever return you get on your investment, जब आपको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता है उसको दोबारा री इन्वेस्ट करते रहिए, और एक बार नहीं एचओडी सर, अगले 15-20 साल तक लगातार करते रहिए। ये मुश्किल है, कहना बड़ा आसान है, हाँ करना चाहिए, अच्छी बात है एचओडी सर, लेकिन मुश्किल है, इट इज नॉट सो इजी। व्हाई? बिकॉज सपोज एचओडी सर यू गेट 5 lakhs रुपीज रिटर्न ऑन सम इन्वेस्टमेंट आफ्टर 5 years, सपोज। अब आपका तो कमिटमेंट है कि ये 5 लाख रुपए जो मुझे रिटर्न का मिला है इसको दोबारा मैं री इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन एचओडी सर पूरा परिवार आपके पीछे पड़ जाएगा, 5 लाख का रिटर्न आया है, अब तो स्विट्जरलैंड ही चलना है। उस टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं ये 5 लाख री इन्वेस्ट होगा, हम स्विट्जरलैंड भी जाएंगे, उसके लिए अलग से मेहनत करेंगे, उसके अलग से पैसा बचाएंगे, लेकिन ये पैसा री इन्वेस्ट होगा। और अगर आपने ऐसा कर लिया, और फिर मैं आपको कह रहा हूं, अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही चाहिए, अगर आपने ऐसा कर लिया तो एचओडी सर 15-20 साल के बाद आपके पास इतना पैसा होगा जिसकी पैसे की आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वो कब होगा? 15-20 साल बाद। और वो कैसे होगा? जब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को रिलीजियसली फॉलो करेंगे, कभी भी रिटर्न को खर्च नहीं करेंगे, उसको री इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो ये जो सारी बातें हमने बात की अभी, सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, रिस्क मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल प्लानिंग की, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, ये आपके इन्वेस्टमेंट सक्सेस के बेसिक पिलर्स हैं। आपको पहले सब इन बातों को समझना चाहिए, तभी आप अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे और तभी आपको इन्वेस्टमेंट में फायदा होगा। अब लास्ट में हम बात करेंगे एचओडी सर, पैसा कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेयर वी कैन इन्वेस्ट द मनी। द फर्स्ट कैटेगरी वेयर वी कैन इन्वेस्ट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वेयर वी कैन इन्वेस्ट in government saving schemes where we can invest. And I don't know which the first scheme of the government which I'm mentioning here, and I don't know HOD sir whether you have started investment in that scheme, but if you have not, Deepshikha and HOD sir, please start opening an account in the scheme I am just mentioning now. And not only you, all faculty members must open an account in Public Provident Fund account, PPF. HOD sir, PPF is a very good scheme of the government of India. And it is a unique scheme which is triple E, exempt, no tax at all. So please do understand and appreciate that Public Provident Fund account is a very good investment product, particularly for salary class, middle class person. And I personally feel that every middle class person must have PPF, Public Provident Fund account. It can be opened with any of the major bank branches or post offices. Those who are already doing net banking, they can open PPF account online itself without going to the bank. Public PPF account can be opened with any of the banks and post offices, and in PPF account you have to deposit every year maximum amount of 1.50 lakhs, and minimum amount is 1,000 only, but 1,000 will have no significance at all. You will have to deposit every year 1.50 lakhs. That is a maximum limit. The tenure of the scheme is 15 years. For next 15 years, every year you will have to deposit 1.50 lakhs, and today the rate of interest in PPF is 7.10%. After 15 years, you should not close that account. There is a provision that even after 15 years, you can extend the account by 5-year period, again by 5 year, again by 5 year, again by 5 year. You should keep extending the PPF account for 2-3 terms of 5 years each after 15 years, unless and until you need the money. So Public Provident Fund account, please note down, PPF account is a very good scheme of the government of India, and those who have not yet opened the account, like
Deepshikha or HOD sir, please open a PPF account as quickly as you can and deposit 1.50 lakhs every year. Okay, sir. And the one more thing I want to tell you, sir, try to deposit 1.50 lakhs at the beginning of the financial year. That is up to financial year simply means from 1st April to 31st March. So when new financial year starts, जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते हैं तो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में ही आप 1.5 लाख रुपया जमा कराइए. और एक मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं HOD सर. सपोज मान लीजिए आपकी एज 30 इयर्स है. एक एग्जांपल देता हूं आपको. आपने आप पीपीएफ अकाउंट खोला और हर साल आप पीपीएफ में 1.5 लाख रुपया डाल रहे हैं. 15 साल तक लगातार 1.5 लाख रुपया डाल रहे हैं और आज की रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.20% है. 15 साल बाद आपके पास पैसा हो जाएगा HOD सर 41,28,000, 41,28,000 रुपया आपके पास जमा हो जाएगा. लेकिन HOD सर समझदार हैं, उन्होंने पीपीएफ अकाउंट 15 साल भी बाद बंद नहीं किया. मतलब 30 साल में चालू किया, 45 साल जब हो गए तो उसको बंद नहीं किया. 45 साल के जब हो गए 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया, फिर 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया और फिर 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया. जब आप 60 साल के हो जाएंगे HOD सर और हर साल आप 1.5 लाख रुपया डाल रहे हैं, जब आप 60 साल के हो जाएंगे आपके पास पीपीएफ अकाउंट में पैसा हो जाएगा 1,88 लाख, 1,88 लाख रुपया आपके पास इकट्ठा हो जाएगा 30 साल बाद में. तो पीपीएफ अकाउंट बहुत अच्छा अकाउंट है, गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई रिस्क नहीं है, टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगता है. तो फिर दोबारा बोल रहा हूं, जिनका पीपीएफ अकाउंट नहीं है वो जल्दी से जल्दी पीपीएफ अकाउंट खोलें और उसको लगातार लंबे चलाते रहें. दूसरा जो स्कीम भारत सरकार की HOD सर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC. मेरे पास टाइम नहीं है, मैं केवल स्कीम का नाम बता रहा हूं, आप गूगल में जाके उसकी डिटेल मालूम कर सकते हैं. ओके सर. तीसरा स्कीम का नाम है किसान विकास पत्रा. किसान विकास पत्रा. और अभी मैं केवल भारत सरकार की योजना बता रहा हूं HOD सर, प्राइवेट बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं. हाँ चौथा है RBI बॉन्ड्स. रिजर्व बैंक भी बॉन्ड इशू करता रहता है और आज भी RBI बॉन्ड पे यील्ड जो आ रहा है वो करीब करीब 8% आ रहा है. अच्छा. RBI बॉन्ड्स. पांचवा है HOD सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. भारत सरकार भी अपने सिक्योरिटीज पब्लिक को बेचती है. आप भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. पहले हमारे लिए मुश्किल था दीपशिखा, लेकिन पिछले साल RBI ने एक नई वेबसाइट बनाई है, आप नोट कर लीजिए. उस वेबसाइट का नाम है RBI रिटेल डायरेक्ट. RBI रिटेल डायरेक्ट. ये चैट बॉक्स में भी मैं डाल रहा हूं, आपका आ रहा है यहाँ. RBI रिटेल डायरेक्ट. कोई भी आदमी यहाँ जाकर अब एक बार अपना नाम लिखवा सकता है, एनरोल करवा सकता है. कुछ डिटेल मांगते हैं, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स. उसके बाद में 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया जब भी आपके पास आता है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और HOD सर आज भी इसका रिटर्न आ रहा है 8%. उसके बाद एक और भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है दीपशिखा, और मैं उनके जिनके घर में बेटियां हैं, आई डोंट नो वेदर HOD सर हैज गॉट डॉटर एट होम. अगर जिसके भी घर में बेटियां हैं और बेटी की उम्र दीपशिखा 10 साल से कम है, 10 साल के बाद ये अकाउंट नहीं खुलता है. ये अकाउंट केवल बेटी के नाम से खुलता है और उस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना. सुकन्या समृद्धि योजना बहुत अच्छी योजना है भारत सरकार की. एंड दीपशिखा, इट इज ओनली फॉर द गर्ल चाइल्ड, बिकॉज नाउ गवर्नमेंट वांट्स दैट एवरी गर्ल शुड गेट एजुकेशन एंड फॉर एवरी गर्ल मैरिज पेरेंट्स शुड नॉट बी बर्डन्ड. इसलिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट में खाता खोलिए, वहां भी 1.5 लाख रुपया जमा कराइए, वहां भी 8.20% आज इंटरेस्ट मिल रहा है HOD सर, और उसमें टैक्स नहीं लगता.
PPF and Sukanya Samriddhi scheme are unique scheme which is exempt of taxes, HOD sir. बल्कि इसको जब PPF में आप पैसा डालते हैं HOD सर, तो आपको 80C में आपको रिबेट भी मिलती है 1.5 लाख तक की, वो भी आप ध्यान रखिए इसमें। तो फिर मैंने बताया RBI बॉन्ड्स। उसके बाद में भारत सरकार के बड़े बड़े संस्थान है HOD सर, रेलवेज, ONGC, NTPC, BHEL, ये भी आपसे डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड इशू करके लोन मांगते रहते हैं, वहां भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में बैंक्स और पोस्ट ऑफिस की भी सेविंग्स स्कीम्स हैं। बैंक ने भी कई सेविंग स्कीम चालू कर रखी है और पोस्ट ऑफिस ने भी कई सेविंग स्कीम चालू कर रखी है, तो आप वहां भी उनका पैसा डालकर उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी जो स्कीम्स हैं उनका एक फायदा है HOD सर और एक नुकसान है। फायदा ये है, इनमें कोई रिस्क नहीं है। जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है दीपशिखा आपको, उतना गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी देगी, और जब ये स्कीम मैच्योर हो जाएगी तब आपको आपका पैसा भी गारंटी के साथ वापस मिल जाएगा, जितना उसका पैसा बनता है, विद इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग। लेकिन HOD सर एक नुकसान है इसमें, और नुकसान ये है, इसमें इंटरेस्ट रिटर्न बहुत कम है। एवरेज 6 से 8% रिटर्न आता है, और अगर 6% महंगाई बढ़ गई HOD सर, तो आपको रियल रिटर्न हार्डली 2-2.5% का बनता है। इसलिए ध्यान रखिए, जहां भी 100% सिक्योरिटी है HOD सर, ये इन्वेस्टमेंट का बेसिक फंडा है। अगर 100% सिक्योरिटी है, रिटर्न कम आएगा। अगर 100% सिक्योरिटी नहीं है, रिस्क है, तो रिटर्न ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है HOD सर, कोई गारंटी नहीं है। अगर गारंटी कहता है तो वो झूठ बोलता है, लेकिन रिटर्न की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके बाद आप कहां पैसा लगा सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम के अलावा HOD सर, आप जानते हैं, वो है रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी, जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप सब जानते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बारे में, इसलिए उसके बारे में डिटेल ज्यादा नहीं बताऊंगा। उसके बाद में एक और ऑप्शन है आपके पास जहां पैसा लगा सकते हैं, और प्रिंसिपल मैम अगर यहाँ अभी हैं, और दीपशिखा, जिस सब प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आई थिंक द फीमेल पार्टिसिपेंट विल फील हैप्पी, एंड दैट इज गोल्ड। हमारे इंडिया में जो फीमेल मेंबर्स हैं, दीपिका आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, दादी को देखा होगा, गोल्ड के लिए कितने पैशनेट हैं वो एक ही बात करते हैं, जितना गोल्ड हो जाए, जितना ज्वेलरी हो जाए अच्छा है, उसके बारे में नो डिस्कशन, वी शुड हैव मैक्सिमम ज्वेलरी। लेकिन दीपिका, फिजिकल गोल्ड इकट्ठा करना ज्वेलरी के टाइप में आजकल नुकसान है। क्यों नुकसान है? मान लीजिए आज आपकी मम्मी ने ज्वेलरी खरीदी और 10 साल बाद ज्वेलरी वापस करने गई कि मुझे नया डिजाइन लेना है, नई ज्वेलरी लेनी है, जो ज्वेलर बोलेगा 35% कट लगेगा मेकिंग चार्जेस का, तो लिटरली यू विल गेट 65%। इसलिए यू शुड डिस्करेज नाउ इन्वेस्टिंग इन फिजिकल गोल्ड। और इसलिए HOD सर, भारत सरकार एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आई है, दीपशिका आप भी नोट कर लीजिए, और घर में जाके सबको बताइए, जितने भी आपके फीमेल और आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, और मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं, ये स्कीम जरूर अपने घर में जाके बताइए। और HOD सर, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, प्राइवेट नहीं है, पहली बात तो इट इज गवर्नमेंट स्कीम। और उस स्कीम का नाम है दीपिका, सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, SGB, सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये बहुत अच्छी स्कीम है भारत सरकार की। और HOD सर, भारत सरकार अब ये चाहती है कि आप गोल्ड में फिजिकल इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो नुकसान का सौदा है। और क्योंकि आप जानते होंगे दीपिका, हमारे देश में गोल्ड की माइंस नहीं है, लेकिन डिमांड है, इसलिए गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है HOD सर, और प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज हमें उसमें खर्च करना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार ये योजना लेके आई है, सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इसमें आपको फिजिकल गोल्ड नहीं दिया जाएगा HOD सर, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इतना सोना आपका हमारे पास रखा हुआ है, मतलब भारत सरकार के पास रखा हुआ है। ये स्कीम HOD सर 8 साल की है, और मिनिमम आप इसमें 1 ग्राम सोने का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम एक इंडिविजुअल आदमी 4 किलो सोने तक का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर सकता है। मैक्सिमम 4 kg, मिनिमम 1 ग्राम।
और ये एचओडी सर, ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम हमेशा चालू नहीं रहती है। अभी फरवरी में आई थी, बंद हो गई, 16 फरवरी को बंद हो गई। अब मोस्ट प्रोबेबली ये मई में आएगी, 3 महीने में आती है एक बार। अच्छा। रोज हमेशा चालू नहीं रहती है, हमेशा ओपन नहीं रहती है ये। तो इसमें इसमें भारत सरकार आपको 3 फायदे दे रही है। पहला फायदा, जितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे उस पे आपको 2.5% एनुअल रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लगाया, तो 1 लाख पे, और ये 8 साल का टेन्योर, इसका जो स्कीम का टेन्योर है एचओडी सर, वो 8 ईयर्स है। तो अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया तो हर साल अगले 8 साल तक आपके खाते में, बैंक अकाउंट में 2500 एज इंटरेस्ट आ जाएगा। ये पहला फायदा। दूसरा फायदा, मान लीजिए आप सोने की कीमत 62,010 ग्राम है एचओडी सर, मान लेते हैं, मोटा मोटा सोना का रेट यही चल रहा है ना, 62,010 ग्राम मतलब 6,200 पर ग्राम। आज आपने इस रेट पे पैसा लगाया, 8 साल बाद सोने की कीमत 80,000 रुपए 10 ग्राम हो जाती है, या 8,000 पर ग्राम हो जाती है। और एचओडी सर आपको पता है शायद, सोने की प्राइस पिछले 40 साल में घटी नहीं है, बढ़ती रही है हमेशा। तो अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए 8 साल बाद सोने की कीमत 80,000 रुपए 10 ग्राम हो जाती है, तो एचओडी सर आपको भारत सरकार 80,000 10 ग्राम के अनुसार आपको पैसा वापस करेगी। जितना सोने की कीमत बढ़ेगी वो पैसा वापस करेगी, 2.5% ब्याज भी देगी, और तीसरा फायदा, इसमें टैक्स भी नहीं लगेगा। इसमें भारत सरकार आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे रही है। इसमें टैक्स भी लिटरली कुछ नहीं लगेगा या बहुत कम टैक्स लगेगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है भारत सरकार की। आप इसके बारे में, और एक मैं इसका एग्जांपल देना चाहता हूं एचओडी सर, ये 2015 में पहली बार स्टार्ट हुआ था, और जिस आदमी ने 2015 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में, वो 8 साल अभी एचओडी सर हुआ है नवंबर 2023 में, या उसको पैसा मिला है 2,28,000, 2,28,000 ऑफ 1 लाख। 118% रिटर्न मिला है सर, काफी मिला है। और टैक्स फ्री, और टैक्स भी नहीं लगता, और सरकार की योजना है, प्राइवेट नहीं है। तो कृपया करके आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का आप ध्यान रखिए। इसमें आप जब भी हो, ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में जरूर इन्वेस्ट, थोड़ा थोड़ा पैसा करते रहिए। आखिरी में जहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एचओडी सर, वो है शेयर बाजार, सिक्योरिटी मार्केट। लेकिन एचओडी सर, आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, आप जानते होंगे लोग शेयर बाजार के बारे में क्या कहते हैं, अरे सर ये सट्टा बाजारी है, पता नहीं कैसे शेयर ऊपर जाता है नीचे आता है। कुछ लोग, किसी को पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, फिर भी किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं और उन्हें पैसे का नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं आपको एचओडी सर कहना चाहता हूं, शेयर बाजार सट्टा बाजारी नहीं है। आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। शेयर बाजार इज प्योरली नॉलेज बेस्ड मार्केट। यस सर। और जिसको शेयर बाजार की नॉलेज नहीं है, उसको कभी भी कानाफूसी में या किसी दूसरे के कहने पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। पहले आप नॉलेज गेन कीजिए, जब नॉलेज गेन कर लेंगे उसके बाद में आप सोचिए कि आप पैसा कहाँ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो शेयर बाजार नॉलेज बेस्ड मार्केट है। और एचओडी सर, आप शायद को पता होगा आपको, शेयर बाजार ने पिछले 35 सालों में हाईएस्ट रिटर्न दिया है, 15% एवरेज रिटर्न एवरी ईयर। एवरेज बोल रहा हूं मैं, कभी 22 दिया होगा, कभी 8 दिया होगा, कभी माइनस भी गया होगा। एवरेज निकाला जाए तो 15% रिटर्न दिया, जो सबसे ज्यादा रिटर्न है ऑल एसेट क्लासेज, गवर्नमेंट स्कीम, गोल्ड, रियल एस्टेट, इन सब में बहुत ज्यादा, तो 15% रिटर्न दिया है। लेकिन फिर मैं कहता हूं, शेयर बाजार में डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना चाहिए अगर आपको नॉलेज नहीं हो तो। लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीका भी है एचओडी सर, जहां आप शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं, और उस इनडायरेक्ट तरीके का नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, दीपशिखा। एंड इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग सिंपली मीन्स एचओडी सर, आप अपना पैसा डायरेक्ट शेयर बाजार में नहीं लगा रहे हैं, अपना पैसा एक्सपर्ट्स को दे रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि मेरा पैसा स्कीम की गाइडलाइंस के अनुसार लगाया जाए, और उस पर जो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आया मुझे वापस किया जाए। अब नेचुरली एचओडी सर आप बोलेंगे, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाऊं?
बिकॉज ऑफ 3 बेसिक रीजन। 3 कारण है बड़े जो आपको समझने चाहिए। पहला सबसे बड़ा कारण है एचओडी सर, मुझे नॉलेज नहीं है। जिनको पैसा दे रहा हूं वो मार्केट के एक्सपर्ट है। अच्छा, मुझे दूसरा कारण, मेरे पास टाइम नहीं है, जॉब है मेरा, फिर फैमिली ऑब्लिगेशंस है। उनके पास 24 आवर आपका पैसा मैनेज करने का ही काम है। तीसरा कारण, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन्वेस्टमेंट का। उनके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस उनके पास अपनी रिसर्च टीम है। हर शेयर को वो रिसर्च करते हैं, हर शेयर को देखते हैं कि कैसा बैलेंस शीट कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, सेक्टर कैसा चल रहा है। जब रिसर्च के बाद ही वो पैसा लगाते हैं। और एक और बात बता दूं मैं एचओडी सर, म्यूचुअल फंड इज नॉट ए पोंजी स्कीम। ये चिट फंड या पोंजी स्कीम नहीं है। इट इज स्ट्रांगली रेगुलेटेड बाय सेबी। ये सेबी द्वारा रेगुलेट किया गया है। इट इज वेरी वेरी स्ट्रांगली रेगुलेटेड बाय सेबी। म्यूचुअल फंड का हर एस्पेक्ट म्यूचुअल फंड का सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। सो इट इज नॉट ए पोंजी स्कीम और चिट फंड। अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का जो 3 बड़ी कैटेगरीज होती है म्यूचुअल फंड में एचओडी सर। 3 बड़ी कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड में। पहली कैटेगरी है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में एचओडी सर आपका पैसा कंपनियों के शेयर्स में लगाया जाता है, खरीदने में और बेचने में। अब नेचुरली कंपनियों के शेयर्स में लगाया जाता है तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। कंपनियों के शेयर में लगाया जाता है, उसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें रिवार्ड भी ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है। ये प्लीज माइंड कीजिए। इक्विटी फंड में रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन रिवार्ड ज्यादा मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पिछले साल, पिछले 10 सालों में इक्विटी फंड ने एचओडी सर करीब 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 15%, 12 से 18% रिटर्न दिया है, जो किसी और फंड ने नहीं दिया। तो इक्विटी फंड उन लोगों के लिए है जो यंग हैं, आप जैसे लोग, दीपशिखा जैसे लोगों के लिए हैं, दोज हु आर यंग। एंड क्यों? एक तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं ज्यादा, मेरे लिए मैं नहीं ले सकता एचओडी सर, लेकिन आप रिस्क ले सकते हैं। दूसरा कारण, आपके पास अभी 15-20 साल बाकी हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जितना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, ये बात समझ लीजिए। वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हमने बात की थी। इसलिए दोज हु आर यंग, I want to encourage them to start investing right at the beginning of their career and be a long-term investor of minimum 10, 15, 20 years. 15-20 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते रहिए, थोड़ा थोड़ा लगातार इन्वेस्ट करते रहिए। और जो सबसे अच्छा तरीका है एचओडी सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का रास्ता जो है, वो रास्ता है SIP, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP is a very good way of investing. और SIP एचओडी सर कुछ भी नहीं है। जैसे बैंक में आप रिकरिंग अकाउंट खोलते हैं, हर महीना कुछ पैसा डालते हैं पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, वैसे ही SIP है। हर महीना कुछ पैसा आप डाल रहे हैं, छोटा छोटा पैसा डाल रहे हैं। मिनिमम जो है दीपशिखा, वो 500 रुपए से SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो है एचओडी सर, कोई लिमिट नहीं है, आप 10 लाख रुपए महीना भी डाल सकते हैं। तो SIP सबसे अच्छा तरीका है मिडिल क्लास, सैलरी क्लास लोगों के लिए बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का। लेकिन वो जब भी पॉसिबल होगा जब आप एचओडी सर लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं एचओडी सर। मान लीजिए किसी आदमी ने 20 साल की उम्र में, 20 इयर्स में एक SIP स्टार्ट की दीपशिखा, केवल 500 रुपए की। हर महीना 500 रुपए वो किसी अच्छे इक्विटी फंड में डाल रहे हैं, और लगातार 40 साल तक चलाई, केवल 500 रुपए एचओडी सर, और 40 साल तक लगातार चलाया उसने। उसके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा 12% रिटर्न की कैलकुलेशन से मैं बता रहा हूं एचओडी सर, 41,38,000 रुपया, 41 लाख, केवल 500 रुपए महीना। लेकिन एक और अच्छा रास्ता है दीपशिखा, वो आपके लिए और एचओडी सर के लिए है।
उस रास्ते पे ज्यादा ध्यान दीजिए। उसमें क्या होता है, हर साल आप SIP का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है, इसलिए हर साल आप SIP का अमाउंट बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए दीपिका आपने 500 रुपए से स्टार्ट किया और अगले साल आपने 10% SIP का अमाउंट बढ़ा लिया, मतलब 550 रुपया कर दिया। और इस बढ़ाने के लिए दीपिका आपको कहीं आना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आजकल ये फैसिलिटी ऑनलाइन अवेलेबल है, सब चीजें ऑनलाइन है। म्यूचुअल फंड के ज्यादातर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो मान लीजिए आपने अभी इस साल आपने 500 रुपये महीना इन्वेस्ट स्टार्ट किया SIP से किसी अच्छे इक्विटी फंड में, अगले साल इसको बढ़ाकर 550 रुपया कर दिया, तीसरे साल 550 का 10% कर दिया, मतलब हर साल आप 5-10% SIP का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है। HOD सर, अगर आपने ऐसा किया 40 साल तक लगातार, तो फ्लैट SIP जो 500 रुपए की थी HOD सर, उससे आपको पैसा इकट्ठा हुआ था 41,38,000। लेकिन अगर आपने SIP का अमाउंट बढ़ाते रहे तो 40 साल बाद आपके पास पैसा होगा HOD सर 1,88,00,000। दैट इज ए मैजिक। लेकिन उसके लिए आपको हर साल SIP बढ़ानी पड़ेगी। तो SIP बहुत अच्छा तरीका है दीपिका, मिडिल क्लास आदमियों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा वेल्थ क्रिएट करने का। लेकिन जितना लंबे समय आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, और जितना आप उसको लंबा चलाएंगे। और मैं तो एक HOD सर, आप जैसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं, मेरे फ्रेंड्स को, उन्होंने एक SIP स्टार्ट नहीं की हुई दीपिका, दे हैव स्टार्टेड 4-5 SIP, 5-6 SIP एक साथ चल रही हैं। और HOD सर, वो सारी SIP टारगेट ओरिएंटेड हैं। एक SIP से घर लेना है, एक SIP से गाड़ी लेनी है, एक SIP से विदेश घूमने जाना है, एक SIP से बच्चों की पढ़ाई करवानी है, हायर एजुकेशन करवानी है, एक SIP से बच्चों की शादी करनी है, और एक SIP से लास्ट की रिटायरमेंट की जिंदगी जीनी है। तो यू कैन हैव मल्टीपल SIPs फॉर योर टारगेट गोल्स, फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स। और मैं फिर आपको कहता हूं, SIP से अच्छा रास्ता नहीं है मिडिल क्लास आदमी के लिए लंबे समय तक इन्वेस्ट करके अच्छा वेल्थ बनाने के लिए। अब नेचुरली मेरे पास समय नहीं है, वरना म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत बातें बताता मैं HOD सर, लेकिन एक एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूं मैं आपको, नोट कर लीजिए। तो सारे पार्टिसिपेंट को कहता हूं कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए, कैसे काम करता है, SIP क्या होती है, कैसे खोली जाती है, कितनी SIP खोलनी चाहिए, कितनी लंबी चलानी चाहिए, एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूं, आप नोट कर लें। उस वेबसाइट का नाम है म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है, ये AMFI ने वेबसाइट बनाई है HOD सर। इसमें म्यूचुअल फंड के बारे में A to Z सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में है। आपके असमीज में भी है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, उड़िया में भी है, बंगाली में भी है। तो अपनी लैंग्वेज में आप जाके उसको धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना आराम से पढ़िए, समझिए। HOD सर, पैसा आपका है, किसी और का नहीं है। तो अगर आपको फायदा होगा तो आपको होगा, नुकसान होगा तो आपको होगा। लेकिन थोड़ा सा समझ कर इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान का चांसेज कम है। अगर आप लंबे समय इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान के चांसेज बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पहले समझिए, पहले पढ़िए, फिर SIP स्टार्ट कीजिए। और HOD सर, एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, आजकल वेबसाइट पे SIP कैलकुलेटर अवेलेबल हैं। मान लीजिए दीपिका जी, आप कहते हैं मेरे 25 साल बाद मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो SIP कैलकुलेटर में आप टारगेट डालिए 2 करोड़ रुपया, समय डालिए 25 साल बाद, आपको कैलकुलेटर बता देगा कितने रुपए की SIP आपको मंथली खोलनी चाहिए। तो SIP कैलकुलेटर इज ए गाइड फॉर यू कि कितने पैसे की हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में केवल 2 बातें और कहना चाहता हूं, समय बहुत कम है, टाइम ज्यादा हो गया है। HOD सर, कभी भी लालच में आकर गलत जगह पैसा मत लगाना दीपिका मैम। आपके आसाम में, बंगाल में लाखों लोग बर्बाद हुए, रोजवेली, शारदा, या आपने बहुत नाम सुना होगा HOD सर।
लोगों का पैसा डूब गया है, लाखों लोग बर्बाद हो गए हैं। क्यों बर्बाद हो गए? कभी आपने सोचा दीपशिखा? इसलिए कि उनको लालच था कि मेरा पैसा जल्दी डबल हो जाएगा, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता है दीपशिखा। लालच में आकर जल्दी समय में ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए एचओडी सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, और प्रिंसिपल मैम को भी रिक्वेस्ट करूंगा, दीपशिखा को भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने एरिया में एचओडी सर एक कैंपेन चलाइए अपने बच्चों के द्वारा उनको। और जो जो भी लोग हैं, पर्टिकुलरली एचओडी सर, पोंजी स्कीम में पैसा कौन लगाता है? पढ़े लिखे लोग कम लगाते हैं। वो लगाते हैं जो हमारे समाज का वो लोग जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, दूध वाला, सब्जी वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, मेड सर्वेंट, पियोन। वो बेचारा, उन्हें कुछ समझ ही नहीं होता, वो लालच में, ग्रीड में आ जाते हैं वो, कि मेरा पैसा जल्दी डबल हो जाएगा। ऐसा कभी भी डबल नहीं होता है। तो एचओडी सर, ये आपकी और मेरी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको समझाइए कभी भी पैसा जल्दी डबल नहीं होता है, आपका पैसा डूब जाएगा। आप इतना कीजिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपना पैसा बैंक में रखिए, अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में रखिए, उनको कम फायदा होगा एचओडी सर, लेकिन उनका पैसा डूबेगा नहीं। तो प्लीज एक ये बात भी हमेशा आगे चलाइए। और लास्ट बात जिसके लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं एचओडी सर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रॉस्पेरिटी जो राइट, हमारा सबका अधिकार है कि हम समृद्ध बने। और समृद्ध की मेरी डेफिनेशन मुकेश अंबानी बनना नहीं है एचओडी सर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। समृद्ध से मेरा मतलब ये है एचओडी सर, मेरे पास पैसा हो मेरी नीड्स के लिए, मेरे पास पैसा हो मेरे परिवार की जिम्मेदारियों के लिए, मेरे पास पैसा हो परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए, मेरे पास पैसा हो मेरे सपनों को पूरे करने के लिए। इस इतना पैसा मेरे पास हो, और ये आपकी मेरी सबका हमारा अधिकार है एचओडी सर। इसलिए प्रॉस्पेरिटी ये लक नहीं है। अक्सर आप, हम इंडियंस की एक और परेशानी है एचओडी सर, हम भाग्य पे बहुत विश्वास करते हैं, भगवान जो देगा उतना ठीक है, जितना जितना अल्लाह देगा वो ठीक है, जो अल्लाह ने देगा वही नहीं है, गलत है एचओडी सर। अल्लाह ने और भगवान ने हमें जमीन पर भेज दिया, यहाँ लड़ाई हमें खुद को लड़नी पड़ेगी, हमें खुद को प्रॉस्पेरिटी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इफर्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप इफर्ट करेंगे तो 100% आप प्रॉस्पर होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसलिए एक बात और समझ लीजिए एचओडी सर, प्रॉस्पेरिटी लक नहीं है, इट इज नॉट लक, इट इज एन इफर्ट, ये हमारा प्रयास है। और अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो प्रॉस्पर नहीं होंगे। लेकिन प्रयास क्यों नहीं करेंगे, ये भी आपको सोचना चाहिए। हम क्यों नहीं प्रयास करें अपनी अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए? हर आदमी को इच्छा होती है मेरे बच्चे अच्छे पढ़ाई करें, हर आदमी को इच्छा होती है कि मैं जिंदगी में बहुत अच्छी तरह जीऊं, बहुत अच्छी। तो ये यही मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें प्रॉस्पेरिटी अपनी क्रिएट करनी है, बनानी है, और ये पक्का बनेगी अगर आप लंबे समय तक एफर्ट करेंगे। और आखिरी में एक बात एचओडी सर, बाई चांस कोई पार्टिसिपेंट ऐसा हो, बाई चांस वो ये कहता हो मैं गरीब परिवार से हूं, आई एम नॉट फ्रॉम ए रिच फैमिली, आई एम नॉट फ्रॉम ए वेल्थी फैमिली, उसको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं एचओडी सर, गरीब घर में पैदा होना अभिशाप नहीं है। बर्थ इन ए पुअर फैमिली इज नॉट ए कर्स एट ऑल, बट लिविंग एज पुअर एंड डाई एज पुअर इज ए कर्स। गरीब होकर जिंदा रहना और गरीब होकर मरना अभिशाप है एचओडी सर, और वो हम सब दूर कर सकते हैं अगर हम अपना पैसा सही बचाएंगे, लगातार बचाएंगे, सही निवेश करेंगे, अच्छा रिटर्न कमाएंगे, लगातार निवेश करेंगे, अच्छी जगह निवेश करेंगे, अपने निवेश को देखते रहेंगे, आप निश्चित तौर पर सब प्रॉस्पर होंगे। इसका विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दीपशिखा। मैं चाहता हूं एचओडी सर अपना ऑब्जर्वेशन दें प्रोग्राम के बाद, सेशन के बारे में। सर बहुत अच्छा लगा। दीपशिखा। दीपिका शायद है नहीं, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई? हेलो दीपशिखा। सर कुछ क्वेश्चंस है हाँ बोलिए, बताइए सर। सेट बॉक्स में। फारहीन।
फारहीन सुल्ताना, फारहीन मैम। सर वो लिस्ट में नहीं है सर, उनका मैं चेक कर रहा हूँ तो। अच्छा हाँ, फारहीन का कोई उनके नाम से कोई भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है फारहीन के नाम से। अच्छा। Sir, Yes. Nasrin ma'am, one of my colleague, Hmm. she gave me some questions to you. Yes, 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 please, please, please. Uh, एक second. Any website we check that brokers, DP and mutual fund distributor is valid or not valid? Yes, very, very good question. My dear, there is a SEBI website. You go to the website of Securities and Exchange Board of India. Okay. There the list of brokers and mutual funds are available. Additionally, for mutual funds, you can go to the website of AMFI, Association of Mutual Funds in India, where all details regarding mutual fund schemes and mutual fund companies are available. For brokers, for registered brokers, you can go to the website of SEBI, SEBI. Very good question. Yes, Bhaskar. Please unmute yourself. Bhaskar Jyoti, please unmute your audio option, please. You have raised your hand, so if any question, please unmute yourself. Deepsika ma'am, where is this Deepsika ma'am? Deepsika. Deepsika ma'am, please unmute your audio option. Sorry to, I cannot mute the camera and audio. जरा देखना एक मिनट, मिस्टर सब्जार. सर एक्चुअली सर उनका मतलब उनकी तरफ से कोई इश्यू है वहां पर, मगर सर यहाँ पर हमने उनको को होस्ट बनाया हुआ है, दीपशिका गोहिन को। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कुछ उनका कुछ इश्यू होगा, उस रीजन से मुझे नहीं लगता है वो अपना ऑडियो ऑन कर पाएंगे दैट टाइम। चलो किसी का और कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज वी आर क्लोजिंग द सेशन. No sir, actually we have one small session for vote of thanks session. Sir? Yeah. So I'm going to start that. Yeah. So we have reached the concluding part of our webinar. I thank all of members who helped me in creating this session a successful one. At first, I would like to thank the member of AMFI, most especially thank Mr. Shoykan Sharma sir, our senior consultants, and Mr. Sabjar Ahmed, the moderator of AMFI. I would like to thank our respected principal ma'am, Mrs. Malamuni Goswami, and the respected teachers, worker of the different department, and the students. I would like to thank the president of Teacher Unit Com, the co-convener of this webinar, Mrs. Rinkumuni Gogoi. I would also like to thank Mrs. Deepsika Guhai for her lovely virtual hostings, and thanks to Mr. Farhin Sultana for her valuable contribution. Thank you, everyone. I would like to thank once again. Just for a minute, Bhaskar Jyoti. Yeah. Can you unmute yourself now? Yes, sir. Yes. Yeah, बोलिए. Hello, sir. Yeah. Today I am very proud to meet Sharma sir, former DGM SEBI. Sir, I have some curiosity about the share market after the
Mr. Bhaskar, your voice is not clear. ही हम आपको Your voice is ये breaking. बात Your voice is not clear. हेलो सर भास्कर सर, Hello. आपका वॉइस नहीं आ रहा है. Your voice is not clear, भास्कर सर. Your voice is not clear. Or if you can kindly write down in the chat box. Please write down in the chat box. भास्कर सर, please. यस सर Yes, now it is clear. हेलो सर अभी अभी सुन रहा है हाँ आ रहा है बोलो. हेलो हाँ हाँ बोलिए. सर हाँ. एज ए